Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, the promised Messiah, peace be upon him, passed away after a short illness at Lahore on the 26th of May 1908. At that fateful hour in the history of religion and of mankind, before his sacred remains were reverently committed to the earth at Qadian on the 27th of May, his foremost and most devoted disciple, Hazrat Hakim Maulana Nuruddin, an eminent divine, a star in the spiritual firmament, a great lover of the Holy Quran, and an outstanding and reputed physician, was acclaimed as his spiritual successor, and the members of the movement swore allegiance to him in his capacity of Khalifatul Masih. This is a humble effort to furnish a short account of his life and character. Hazrat Maulana Nuruddin was born in 1841 at Bira, Punjab, which is now a part of Pakistan. He was the 34th in direct male lineal descent from Hazrat Umar, the second Khalifa of the Holy Prophet of Islam, peace be upon him. हज़रत खलीफातुल मसीह अव्वल के वालिद का नाम हज़रत हाफिज़ ग़ुलाम रसूल था और आपकी वालदा का नाम हज़रत सैयदा नूर बख्त साहिबा था। हज़रत हाफिज़ ग़ुलाम रसूल साहब का शजर नसब अगर हम पीछे की तरफ जाएं देखें तो वो हज़रत उमर से जाकर मिलता है और हज़रत सैयदा नूर बख्त साहिबा का शजर नसब, आपकी वालदा का शजर नसब जो है वो हज़रत अली से जाकर मिलता है। और आपको ख़ानदान में कुरान से इतना इश्क था तमाम लोगों को कि अगर हम आपके ख़ानदान में, क्योंकि हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल ख़ुद भी हाफिज़ थे, और अगर हम इनकी पुश्त में पीछे की तरफ जाकर देखें तो 10वीं पुश्त तक तमाम अफराद जो थे ख़ानदान के वो हाफिज़ कुरान थे। Maulana Nuruddin's initial education came from his mother, who taught him the Holy Quran with translation and instructed him in elementary primers on Muslim jurisprudence. हज़रत खलीफातुल मसीह अव्वल ने एक जगह अपनी जब आप कादियान में तशरीफ़ ले आए तो एक दफ़ा ये भी फरमाया कि अगर मेरे वालिद आज ज़िंदा होते तो मुझे यकीन है कि मुझे आला तालीम के लिए अमेरिका भी भेजते। तो इस तरह से आपके वालिद जो थे एक बहुत हमदर्द और मोहब्बत करने वाले इंसान थे अपनी औलाद के साथ। He received his early education from public schools in Lahore and Rawalpindi. In Rawalpindi, he studied for the diploma in education. He did so remarkably well in diploma examination that at the early age of 21, he was appointed headmaster of an English school in Pind Dadan Khan, a town a few miles from Bera, across the river Jhelum. He held that office for 4 years, after which his quest for knowledge took him all over India. So after leaving this assignment, then he embarked on his traveling in order to gain more knowledge. So he traveled to Lahore, he went to Delhi, he also went to Rampur and Lucknow and Bhopal. During this traveling, he was in need of so many things and there were some problems as well. But this was the way of Allah with this great servant of Islam, Hazrat Maulana Nuruddin Sahib, that Allah Almighty was always there to help him. At the age of 25, he traveled to the cities of Makkah and Medina. توجه حضرة الخليفة الأول رضي الله عنه في سن الشباب، في بداية سن الشباب، إلى مكة والمدينة لأداء فريضة الحج ومن أجل تعلم علم الحديث، وكان يود أن يلتقي بمجموعة من الشيوخ والعلماء الأفاضل الذين بالفعل قد التقى بهم ودرس على أيديهم. طبعا رحلته إلى مكة والمدينة هي كانت جزءا من رحلته التعليمية العظيمة التي درس فيها الكثير من العلوم وأصبح فيما بعد عالما في الدراسات القرآنية وفي اللغات وفي الطب الطبيعي. He returned from Arabia through Delhi, where he had arranged to send some books which he has brought from Arabia. But anyway, ultimately he reached Bhera, and there he managed to make some arrangements for preaching of Islam, because he was very enthusiastic about the Tabligh.
Maulana Nuruddin came to be acknowledged as an outstanding physician of his time. In diagnosis, he had no equal. His striking improvisations fully justified themselves. हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल ने जहाँ दूसरी तालीमात हासिल की, फ़िक़्ह और हदीस की और कुरान की और सब की, वहाँ आपने तिब में बहुत आला मकाम हासिल किया। और तिब में आपका इतना नाम हुआ हिंदुस्तान में और बर्र-ए-सग़ीर एशिया में कि आपको हकीमुल उम्मत के नाम से भी पुकारा जाने लगा। और हिंदुस्तान के गिरदो नवाह से, दूर और नज़दीक से बेशुमार लोग आपका नाम सुनकर और आपकी तारीफ़ सुनकर, हिकमत की तारीफ़ सुनकर आपके पास इलाज के लिए आते थे। लेकिन आपका अमीरों और गरीबों से एक जैसा सलूक होता था। ये नहीं होता था कि कोई अमीर आ गया तो आपने उसको प्रेफरेंस दी, आपने उसको पहले बुला लिया या पहले उसका इलाज किया, नहीं। In 1876, he went to Kashmir at the behest of His Highness the Maharaja Ranbir Singh and remained there for 15 years as his royal physician. عندما كان حضرته يمارس الطب بصفته طبيب الملك أو الطبيب الملكي لملك كشمير مهراجة كشمير، كان في هذه الأثناء يعلم أفراد البلاط الملكي الذين كانوا من المسلمين العلوم الإسلامية المختلفة. أيضا المهراجة بنفسه كان قد تعلم على يديه الكثير فيما يخص الإسلام، حتى إنه قد أخذ على يديه تقريبا نصف ترجمة القرآن الكريم. हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल की याददाश्त बहुत तेज़ और बहुत अच्छी याददाश्त थी। एक दफ़ा हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल किसी सफ़र पर जा रहे थे, जो हाथी के ऊपर उनका सफ़र था और वो तकरीबन 30 दिन का सफ़र था, तक 1 महीना लगना था। उस दौरान आपने कुरान करीम हिफ़्ज़ करना शुरू कर दिया हाथी पर बैठकर, और आपने उस सफ़र के दौरान ही 1 महीने का दौरान आपने कुरान करीम के 14 सिपारे हिफ़्ज़ कर लिए, जबकि आज के दौर में मेरा ख्याल है बहुत ज़हीन इंसान भी 1 महीने के अंदर 14 सिपारे हिफ़्ज़ करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। So it was a great achievement that within 1 month, while he was in journey, he was memorizing the Holy Quran, which he accomplished later on, and finally he memorized the whole Quran by heart. As a matter of fact, he was greatly in love of reading the books. He had his own big library. He was very fond of the books. Wherever he was able to get anyone, he would always get it and utilize it. Once it is mentioned that a very wonderful book came to his hand. It was a big book of 700 pages, but the time at his disposal was only 6 hours. So within that short time, 6 hours, he went through all the pages of the book and benefited from it thoroughly. His interest in books was not only limited to religion. He had in fact read all the works of Shakespeare in Arabic. He was very zealous about the service to religion, especially to make preaching among the other people of the religions. And for that purpose, whenever he came into contact with any association which planned to preach the religion of Islam, he became a fan of that actually. So during this time, Anjuman-e-Himayat Islam was one of the associations which was set up by some of the zealous Muslims in India. So he got associated with that Anjuman, which was called Anjuman-e-Himayat Islam. Maulana Hakim Nuruddin had by this time acquired great repute as an outstanding physician, a learned divine, a discerning mystic, and an exemplary believer. He had for long been seeking for a perfect spiritual guide and spiritual preceptor. In 1884, he came to know of Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, peace be upon him, through one of his announcements, and felt a strong urge to visit him. سمع حضرة الخليفة الأول بالمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام بسبب ما قام به حضرة المسيح الموعود من دفاع عظيم عن الإسلام في ذلك الوقت مقابل هجمات المتنصرين وغيرهم من الأديان في الهند كالهندوس وغيرهم. عندما سمع به وعرف عن خبره توجه مباشرة إلى قاديان، وهناك
بمجرد أن وقعت عينه عليه أدرك تماما بأنه صادق، وتوجه إليه وطلب منه أن يأخذ منه البيعة لكي يكون تابعا ومريدا